guys, especially congratulation to all those जिन्होंने पाकिस्तान से इस दफ़ा अप्लाई किया हमारी गाइडेंस के ऊपर और हाई हाई अचीवर्स हैं, टॉप स्कोरर हैं, उनको स्कीम की ऑफर्स हुई हैं और रैंकिंग की ऑफर हुई हैं। तो हमने सोचा कि हम इस पे एक वीडियो बनाते हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि आप कैसे अपने चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए। बेस्ट ऑफ लक एनीवे। तो मेरे साथ डॉक्टर मुआज़म है, जिन्होंने जो के एआईपीपीएस जो पाकिस्तानी एसोसिएशन आयरलैंड के अंदर डॉक्टर्स को लुक आफ्टर करती है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और ऑल्सो आयरिश सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स जो सारे इंटरनेशनल डॉक्टर्स को लुक आफ्टर करती है, उसके भी जनरल सेक्रेटरी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। तो ये इन्होंने बनाई है अपनी एक पूरी प्रेजेंटेशन इस सारे टॉपिक को करने के लिए। इसमें आप दोनों कवर हो जाएंगे, बीएसटी और ये जो जीपी है, बस स्पेशली जीपी। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशंस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स का। तो डॉक्टर मौजम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। रात के 12-1 बज चुके हैं एंड यूर पोस्ट कॉल एंड आई एम ऑन कॉल। सो नहीं तो नहीं, बहुत कोई टायर्ड, मसला बट नहीं। डॉक्टर अली, मंडे थैंक यू लास्ट सो डे है मच तो। हाँ जी। फॉर ब्रिंगिंग दिस अप एंड एक तो अगेन सबसे पहले मैं उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनको अभी ऑफर्स हुई हैं एंड आईसीजीपी हैज़ आस्क्ड देम टू सबमिट देयर रैंकिंग ऑर्डर। एंड मैं बल्कि आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा लिखा भाई। आपने बहुत सारी वीडियोस इस पिछले 4-5 महीने जब से ये आईसीजीपी का प्रोसेस शुरू हुआ है एप्लीकेशन का, बल्कि इससे पहले भी आपने शुरू कर दिया था लोगों को गाइड करना, और उसके बाद से आपकी वीडियोस देख के भी काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन एक्चुअली सबमिट करवाई है, हमें भी फीडबैक मिलता रहता था। तो इससे पहले कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करूं और लोगों को हम थोड़ा सा बता सकें कि उन्होंने कैसे अपनी रैंकिंग ऑर्डर सबमिट करवाना है स्कीम्स का, आप थोड़ा सा काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मे बी इन 5 मिनट्स कि अभी तक आपका लोगों को गाइड करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और हाउ यू फीलिंग अबाउट दिस। आप पोल करेंगे इस पे कि क्या रिसोर्सेज यूज़ किए आप लोगों ने, और स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। नहीं, आप बस जनरली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर अच्छा, कर दें बेशक। ठीक है जी, इससे बहुत पहले शुक्रिया। कि हम start- एक जी। चीज़ बताना भूल गया कि डॉक्टर मौज़म जो हैं वो उनका पीट्स का 7-8 साल का आयरलैंड का एक्सपीरियंस है, और वो जीपी ट्रेनिंग में गए हैं लास्ट ईयर, एंड ही इज ईयर 2 जीपी ट्रेनी, एंड दैट्स व्हाई ही विल बी आई द एम की वेरी फिगर हैप्पी। टू गाइड यू। वेरी हैप्पी। चलिए डॉक्टर मौज़म, बहुत शुक्रिया। तो चलें आप फिर मेरे ख्याल में मैं पहले प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता हूँ, जी जी। फिर हम उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, वेयर आई इज माय स्लाइड। जी, कैन यू सी इट नाउ? जी जी, एब्सोल्युटली, Okay, that's all वेरी right. क्लियर। So, as we spoke in the beginning, that in this presentation, we'll be just talking about how to rank the schemes when you are submitting your final part of the application. And because आप वो वाले lucky लोग हैं जो out of many hundreds, you're the final lot जिनको कॉलेज ने invite किया है कि you submit, and hopefully maybe out of 10 you have 9 chances out of 10 that you will be offered a scheme. So how to maximize your chance and how to minimize the chances or the risk of missing the offer, तो उसके लिए हम एक strategic approach आपको बताएंगे इस next 5 to 10 minutes के अंदर। बिफोर गोइंग टू दैट डिटेल, मैं थोड़ा सा हम क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपको सबको पता है कि आईसीजीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव डे बाय डे। नेक्स्ट थिंग इज़ आपको स्ट्रेटजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने कौन सी स्कीम को चूज़ करना है if you are really want to go into the training scheme, and if you don't have any other particular priorities, like everyone is in their own shoes, so they need to decide according to their own circumstances. But if you're getting into the training scheme is your the ultimate goal at the moment, then you would need to decide very strategically. सो इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कितनी स्कीम्स हैं अभी
रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर। तो ऑन द टाइप राइट कॉर्नर is the grayish part is Northern Ireland, which is not included in Republic. So that's it omitted. So we'll just concentrate on Republic. So I'll start from the southwest. And इसमें कॉर्क जीपी ट्रेनिंग स्कीम है। इसमें मोस्टली कॉर्क सिटी और कॉर्क काउंटी इंक्लूड होती है। एंड सेकंड वन इज़ मिडलैंड स्कीम। मिडलैंड स्कीम आयरिश आयरलैंड की मिडलैंड्स हैं, जिसमें तीन टाउन है मोस्टली, पोर्टलिश, टलमोर एंड मुलंगार। एंड लॉन्गफोर्ड काउंटी भी इसमें इंक्लूड होती है वैसे तो। लेकिन हॉस्पिटल मेन तीन है इसमें, मिडलैंड रीजनल हॉस्पिटल, पोर्टलिश, MRH Tullamore, and MRH Mullingar. And then the next one is Midwest GP training scheme. That includes County Limerick and County Cork, sorry, County Clare. So ये वाला एरिया जो है आपके पास, ये क्लेयर है और ये लिमरिक है। ठीक है, I hope you can see my cursor. And then there's the Northeast scheme. Northeast scheme is very competitive scheme as well, because it's near to Northern Ireland, and it's near to Dublin as well. It includes Meath, County Meath, and it includes County Cavan and Monaghan. On then the next one we'll talk about is RCSI scheme. That is one of the three, four schemes which are in or very near to Dublin. So one of them is RCI, the second one is TCD, Trinity College, Dublin, and then the third one is UCD, University College Dublin scheme, and the fourth one is Northeast Dublin, North Dublin City scheme. So ये फोर जो हैं ये मेन डबलिन सिटी एसोसिएटेड स्कीम्स हैं। Then the fifth one, Midlands, is also considered as like very near to Dublin, and the Northeast is very near to Dublin. So totally six schemes which are very near to Dublin, and they are one of the most competitive schemes as well. And then there's comes the Southeast scheme, जिसमें Southeast scheme में ये येलोइश पार्ट ऑन मैप के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें वैक्सफोर्ड है, वाटरफोर्ड है, किलकैनी और कार्लो का एरिया आता है, और सम पार्ट ऑफ टिपरेरी एज वेल। मोस्टली टिपरेरी जो है वो लिमरिक वाली स्कीम में आता है। Then the Southwest scheme है। Southwest scheme is one of the very good schemes as well. इसमें ट्रली है, ट्रली का टाउन और कैरी, काउंटी कैरी basically, and some part of county Cork. And then there comes the Western scheme। Western scheme में Galway, Castlebar, पोर्टिंकला का कोई इलाका आता है इसमें। तो मोस्टली जो रोज कॉमन काउंटी है नियर पोर्टिंकला, एंड देन गॉलवे एंड मेयो, कैसलबार। And then comes the Sligo scheme, which is again very competitive scheme, and it has its own perks. So these are all the schemes. Then before going into further details of the schemes, we'll just quickly go towards the ranking process, the reason you guys are here. सो जो रैंकिंग प्रोसेस होता है उसमें कॉलेज ने आपको भेजा होगा कि आप 1 to 12 और या जितनी भी टोटल स्कीम्स हैं उसको योर प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसके मुताबिक आप उनको रैंक में लिस्ट में बना के भेजें। सो आपने अपनी प्रेफर्ड ट्रेनिंग स्कीम अपने ऑर्डर के मुताबिक उनको भेजनी है, एंड देन ऑफर्स विल बी मेड अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स एंड योर इंटरव्यू स्कोर, योर टेस्ट स्कोर, इंटरव्यू स्कोर्स विच मेक्स अ cumulative स्कोर, एंड uh, how many places they have in that scheme. Uh, it has multiple factors. जैसे इट इज़ ऑब्वियस कि अगर आपका हायर रैंक है, हायर मेरिट नंबर है और हायर डिसाइल में आप हैं, रिसेंटली आईसीजीपी ने डिसाइल्स में करना शुरू कर दिया था। दे if for example if they have 300 seats, so or 350 I think recently, so they will make 35 ग्रुप कैंडिडेट्स का एक डिसाइल बनाएंगे। सो फर्स्ट द टॉप 35 candidates will be on the 10th decile, and then the second highest 35 candidates will be on the second decile, and so forth। जो आखिरी 350 में जो 315 से लेकर 350 तक कैंडिडेट्स जो होंगे, दे विल बी इन 35th decile। इट इज़ जस्ट वन एग्जांपल, इट कैन बी, द नंबर कैन वेरी। ठीक है, और उसमें उसमें डिसाइल में आने के सिर्फ जो आपके नंबर हैं टेस्ट के और इंटरव्यू के, सिर्फ वो मैटर नहीं करते, उसमें आपका इमिग्रेशन स्टेटस भी मैटर करता है। सो द आयरिश सिटीजन्स विल हैव मोर स्कोर देन द स्टैम्प 4, एंड EU citizens will have the second higher score,
and then the stamp one holders will have the third highest score, and people who are applying from outside of Ireland and does not have any kind of immigration status or work to right a right to work in Ireland at the moment will be in the fourth or the least um, the minimum scores in terms of immigration status. So it's may just wanted to highlight again that it's not only your test or your interview, but also the scoring also includes your immigration status. सो द की फैक्टर्स में जब आपने रैंक करना है तो उसमें आपने क्या देखना है. फॉर एग्जांपल अब आपकी स्कोरिंग हो गई है, ठीक है, एंड नाउ यू नो व्हाट वेयर आर यू लाइंग इन समवेयर सेवन्थ और सिक्स और सेवन्थ डिसाइल और फर्स्ट डिसाइल और टेंथ डिसाइल. उसको कंसिडर करते हुए आपने एक वो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपने देखना है कि आपने किस कौन सी स्कीम चूज करनी है. एंड द सेकंड वन इज लोकेशन एंड कम्यूटिंग. It again depends if you're already in Ireland and your kids are in school, or it's difficult for you to move the house, then you definitely consider number one, location and commuting. The second one comes, it's more career oriented option. It's hospital rotations and experience. So like एक जस्ट एक एग्जांपल है कि स्लाइगो स्कीम एंड डोनिकल स्कीम में सिर्फ एक हॉस्पिटल में आपकी सब रोटेशन हो जाती हैं, एज कम्पेयर टू मिडलैंड स्कीम जहाँ पे आपको थ्री हॉस्पिटल्स में आपको रोटेट कर थ्री हॉस्पिटल्स हैं. उसमें ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक 4 मंथ्स के लिए पोर्टलिश में भेजेंगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स यू विल बी Tullamore and next 4 months in Mullingar and the next 4 months you're back. Like you might not get a chance to work more than 4 hours in 4 months in one hospital, and you keep rotating all your 2 years. Uh, then the third one is competition and entry score. So this is very important and tricky point, because all the scheme which are in Dublin or near to Dublin, like Dublin की अपनी चार स्कीम है जिसमें नॉर्थ डबलिन स्कीम, यूसीडी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कीम, टीसीडी ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन स्कीम एंड आरसीएसआई. तो ये चार डबलिन की अपनी स्कीम है, और दो डबलिन के करीब वाली जो इसमें एक नॉर्थ ईस्ट आती है, जो मोनाहन केवन और मीथ वाली, एंड द सिक्स वन मिडलैंड्स. So these one is very close to Dublin. They're like only an hour drive. So they are highly competitive schemes, and if your score is not good, and especially I अगर आप के पास आयरलैंड की सिटीजनशिप नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, even if you have stamp 4, I would be a little bit hesitant to put डबलिन की जो मेन चार स्कीम है उनको अपने टॉप रैंक्स में रखने के लिए. So then the fourth important factor is personal and family consideration. Again, जैसे मैंने शुरू में बात की कि if your kids are in school or if your spouse is working, or if you have other family or personal commitments, then you definitely need to put that in consideration. And then your future career prospects as well. For example, if somebody is interested in dermatology, so you definitely need to check, maybe ask people which hospitals have dermatology, or which schemes are linked to those hospitals which can offer you a dermatology rotations in 4 months during your GP scheme. I know people who have done dermatology. I know people who have done ENT during their GP training. But there are some other hospitals which does not have these specialties as well. For example, in Donegal, you won't get a chance to do ENT or dermatology or even any other, for example, ortho. It's very, very unlikely that you will be offered to do rotations in these specialties while you are on GP training program. While in Sligo, there's an ophthalmology as well. You might get a chance. I'm not sure, but if you can try, you might get a chance to get a 4 months in ophthalmology or ENT. Definitely invest scheme like Midwest in Galway or Castlebar. You might get a chance to get dermatology. People have done dermatology in that scheme. So that's how your future career prospects can affect your ranking order.
हाँ, ये सेम वही स्लाइड है जो हमने शुरू में बात की है, लोकेशन एंड कम्यूटिंग की। इसमें एक पॉइंट है रूरल वर्सेस अर्बन। इट्स फॉर मी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट it is something which has affected me. So if you don't like living in urban area, city life, then you might not like to schemes such as Midwest or Cork or Dublin schemes. Still, Midwest is not that much crazy in terms of this urban lifestyle, but definitely Dublin scheme will be mostly lifestyle where you might end up getting having paying for like high rents and high cost of living. But there are other people who don't like rural lifestyle and who prefer to stay in cities. So उन लोगों के लिए मे बी डोनेगल या कैरी, ये वाली स्कीम्स जो हैं साउथ वेस्ट स्कीम्स, ये मे बी दे आर नॉट, those schemes are not attractive to those people who don't like prefer living in rural areas. So just according as you know, considering your own circumstances and preferences, I would recommend do consider this because it's a 4 year commitment. It's not like 6 months or maximum 1 year. It's 4 year commitment. It's a quite long period, and then you'll have to do exams in that one as well. And then there's another thing in GP training program that every week you have a teaching day. So every scheme will have one one center where the whole the scheme have to come, all the trainees have to come and attend the teaching day on that particular location. एंड जो कि हम शुरू में अगर मैप्स में देखें तो ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये सारे हर स्कीम का टीचिंग लोकेशंस हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल डोनेगल की लेटर कैनी के अंदर है, जो साउथ ईस्ट है वो वाटरफोर्ड में है, मिडलैंड्स की टुल्लामोर में है, साउथ ईस्ट की नेवन में है। सो सो no matter wherever you are in your rotation, 4 month rotation, every week you will have to go reach that location for your teaching day. So you need to consider that as well. It might be a minor factor, but it is one factor to consider. Then I think हमने hospital rotation and experience के बारे में भी बात की थी. So it's just the same slide. Then this is the important, very important slide, competition and entry score. So some schemes are more competitive than others. For example, Dublin schemes are definitely more the most competitive schemes. If मेरे पास अगर आयरिश पासपोर्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगा, कोई एक स्कीम भी डब्लिन की पहले 6 स्कीम्स में नहीं रखूँगा, because usually first 6 to 7 schemes orders are your best chance to get into the scheme. So I would always recommend to research past trends. अभी उन लोगों से बात करें जो उन स्कीम्स में ऑलरेडी जा चुके हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं। कोई ना कोई कॉन्टैक्ट्स या कॉन्टैक्ट्स के आगे कॉन्टैक्ट्स से आप बात करें और रिसर्च करके फिर आप प्रेफरेंस लिस्ट में अपना उसको ऑर्डर करें। देन अभी रिसेंटली एक ट्रेंड आया पिछले 2 साल से कि डोनेगल स्कीम, everybody is putting Donegal scheme in number one because we all know somehow that Donegal scheme was over the last 4 or 5 years. Donegal scheme was the least competitive schemes, one of the least competitive schemes along with Kerry. But in last 2 years, specifically in last year, Donegal was the most फर्स्ट और रैंक स्कीम, लाइक सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने नंबर वन रैंक डोनेगल स्कीम को किया था, जस्ट इन अ होप टू टू गेट एन ऑफर। मोस्टली सब लोगों का ये जो मेन कॉज थी वो ये थी कि they put number one to Donegal because they know that if they put Donegal on one, they will definitely get the scheme, or they have higher chance of getting the scheme. So maybe this time it will be same. I'm not sure about Carry. Carry is not that much competitive yet, but it might change this year. But definitely, I would still go for maybe number one Carry, number two Donegal. If just getting into scheme is your the ultimate goal at the moment. Next,
अदर जो अदर स्कीम्स है कम्पिटिटिव, जैसे मैंने पहले कहा, डबलिन है, डबलिन की सारी स्कीम्स कम्पिटिटिव हैं, डबलिन के साथ वाली नॉर्थ ईस्ट कम्पिटिटिव है, मिडलैंड्स भी कम्पिटिटिव है। उन 6 स्कीम्स के अलावा स्लाइगो इज़ वेरी कम्पिटिटिव स्कीम एज वेल, बिकॉज स्लाइगो इज़ वेरी beautiful and good city to live in, and it has its other perks, such as there's only one hospital in Sligo. Your all the rotations will be in just one hospital, and as a big hospital with other rotations as well, other specialties as well, ENT, eye, cardiology. Cardiology mostly the based in Galway, sorry, but Sligo is definitely much bigger hospital as compared to Letterkenny or Cavan or Monaghan. So, and it is a very decent sized town. It's nearly a city now, and it's near to Northern Ireland border as well. So it has multiple factors for people to select Sligo higher in their ranks and to make it more competitive um, uh, scheme. So if you don't have Irish passport or stamp 4, just think about it. And but if you have stamp 4, you might get a chance, but always do research before finalizing your decision. Then there are some other I would say it's minor or personal family considerations. For some people, it may be a minor factor, but some people it is very important. So how you will think work-life balance in different locations, your spouse and partner's job opportunity, your childcare and schooling, if applicable, as we spoke earlier, and social support and well-being factors, and future career prospect. We have already discussed this, and common mistakes. So again, ranking only the most competitive scheme. So if you just put all the Dublin scheme in your first 4 or 5, and if you missed first 2 to 3 schemes, if you don't make a place into your first 2 to 3 ranked schemes, you might get pushed down to your eighth or ninth preference, or sometime maximum sixth or seventh. But definitely, you will. It doesn't mean that if you don't get on your first or second, you will be offered third. You might not get a chance to the third or fourth preference, because there are those ones are will already be filled. So you will get pushed down to way down on your preference list. Then the choosing scheme without proper research, as I already mentioned, and then the ignoring the impact of location and lifestyle. I would never do that. It has happened to me and it has affected me myself. So location and lifestyle, आप अपनी personality को, अपने circumstances को सामने रखते हुए इसको decide करें please. And then next, not considering the long-term career goals. That's very important as well. So the final tips क्या हैं इसमें? Rank scheme based on your balance of preference and strategy, and be realistic about competition and past score trends. Seek advice from current trainees and mentors. Very important. I would just definitely do this point, if not any of others. So, and consider both short-term and long-term goals, and stay flexible with alternative options, so that you don't get uh, uh, worried in the end and dejected in the end. So that's it. That was try to keep it short. So Dr. Lika, please go ahead if you have any questions. बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर माज़म फॉर सच अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसको मैं इंटरेक्टिव सेशन में थोड़ा सा नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर समराइज करता हूँ आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे Good. बस 3 क्वेश्चंस हैं। इसको हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो फोकस है, क्योंकि 3 कैटेगरीज हैं। एक के पास आरिश पासपोर्ट है, फिर दूसरी कैटेगरी के पास स्टैम्प 4 है जो कि परमानेंट रेजिडेंसी है, फिर तीसरी कैटेगरी है जिसके पास सिंपल स्टैम्प है या स्टैम्प नहीं है। तो चौथी कैटेगरी है जो बाहर है, पाकिस्तान में इस वक्त। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जिनके पास स्टैम्प 1 है या हम्म। जिनके पास कोई स्टैम्प नहीं है वो इक्वल कंसिडर नहीं होते। मेरे ख्याल में रैंकिंग में वो इक्वली कंसिडर होते हैं, स्कोर पर डिपेंड करेगा। मेरे क्योंकि ख्याल से मुझे तो सेम हाँ इमिग्रेशन हाँ, सही सही कह रहे हैं आप। इमिग्रेशन स्टेटस पॉसिबली मुझे जो लग रहा है
क्योंकि पाकिस्तान से कुछ लोगों को मिली है। अच्छा, पहली तो चीज़ ये है कि ये ना समझे कि आपको नहीं मिलेगी, पाकिस्तान से कुछ लोगों को डायरेक्ट मिली है, लास्ट टाइम भी मिली है, और जिनके पास स्टैम्प 4 नहीं है उनको भी मिली है। तो ये अब डिपेंड करेगा। आप शतरंज अगर खेलते हैं तो ये अब माइंड गेम है, आपने बड़ी अपनी रिसर्च करने के बाद चीज़ें देखनी है। अब इसमें आप मुझे डॉक्टर मौजन ने बता दिया है कि जिनके पास पासपोर्ट है आयरिश पासपोर्ट है, उनके लिए डेफिनेटली मैटर करेगा कि वो अगर पहली तो बात यह है कि आपने करनी है या नहीं करनी ट्रेनिंग। कुछ लोग इसमें भी थोड़े से वो होते हैं डाउटफुल। तो उनके लिए हाईली कॉम्पिटिटिव स्कीम भी मेरे ख्याल में ऑप्शन हो सकती है, अगर किसी के पास आयरिश पासपोर्ट है और उसका स्कोर अच्छा है, उसको पता है स्कोर अच्छा है, तो वो तो चलो सोचे। जो IMGs की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेट, तो वो। अब जो दूसरी कैटेगरी है स्टैम्प 4 की, डॉक्टर मौजम, इनके लिए जो जिसे कहते हैं ना कि मॉडरेटली कॉम्पिटिटिव स्कीम्स, वो क्या हो सकती हैं डबलिन से बाहर, और फिर लीस्ट कॉम्पिटिटिव कौन सी हो सकती है, अगर आप इसको समराइज करें। आ, देखें डॉक्टर लिखा अगेन, जैसे मैंने शुरू उसको किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें थोड़ा सा वो टोक रहा हूँ हम्म। माजरत के साथ। हम इस क्वेश्चन को पीछे रख देते हैं कि आपने अपने सिटी को सिलेक्ट कर, आपने अपनी वो फाइनेंसिस को देखना है या आपने कम्यूट को देखना है, इसको फॉर एग्जांपल हम भूल जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग आना चाहते हैं उनको है कि हमने जॉब लेनी है और ट्रेनिंग लेनी है। आयरलैंड उनके लिए एक छोटा सा मुल्क है और 2-3 घंटे कम्यूट कर लेंगे, तो वो डेस्परेट हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। उनके लिए तो ये पॉसिबली चीज़ें मैटर ना करें। हाँ, एक आयरिश नेशनल है इधर, उसके लिए ज़्यादा मैटर करेंगी, मेरी कम्यूट छोटी हो, मैं फैमिली के साथ रहूँ, वो प्रायोरिटीज नहीं, कुछ ऐसे पॉसिबली है। लोग भी हैं जो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं, दे हैव अप्लाइड इनटू अदर ट्रेनिंग, अदर स्पेशलिटीज एज वेल। हाँ तो वो स्टेम फोर होल्डर्स हैं और उन्होंने बीएसटी कहीं और भी अप्लाई की हुई है, और उनको बीएसटी मेडिसिन से भी ऑफ़र है और उनको जीपी से भी ऑफ़र है, और जी, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। तो वो फॉर थोड़ी। एग्जाम्पल, अगर हम्म। हम उन लोगों को कंसिडर करें जिनके लिए यही ऑप्शन है कि उन्होंने ट्रेनिंग लेनी है बस। हाँ, अगर ये है पॉसिबल, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने कहा है कि बस मैंने किसी न किसी तरीके से ट्रेनिंग में ही घुसना है, हम्म, तो अगर उसके पास स्टेम फोर है, स्टिल जस्ट फॉरगेट अबाउट डबलिन। हम्म, ठीक है, ठीक अगर है। आपके पास आयरिश पासपोर्ट नहीं है तो फॉरगेट अबाउट डबलिन स्कीम्स। ठीक है, हम्म, नो मैटर स्टैम्प फोर है या जो भी है। ठीक है। अगर आपने स्कीम में घुसना है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑफर में, फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। देन आई वुड गो फॉर द मोस्ट लाइक लीस्ट कम्पिटिटिव स्कीम्स, जिसमें कैरी, डोनेगल। डोनेगल पहले नंबर वन पे आती थी, लेकिन जैसे मैंने कहा लास्ट 2 ईयर हाँ से जी। थोड़ी कम्पिटिटिव हो रही है। ठीक है। तो कैरी, डोनेगल, आई एम नॉट, मिडलैंड्स को मैं डेफिनेटली इसमें नहीं रखूँगा, स्लाइगो को भी नहीं रखूँगा। स्लाइगो में आपका चांस लग सकता है अगर आपका स्टैम्प फोर है। ठीक है, बिकॉज स्लाइगो इज़ डेफिनेटली बेटर देन गॉलवे मिड वेस्ट स्कीम हाँ, मेरी नज़र में। मे बी पीपल, सम पीपल कैन डिफर फ्रॉम मी, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा स्लाइगो वाली स्कीम के पर्क्स ज़्यादा लगते हैं। वो एक हॉस्पिटल में सारी रोटेशन है, वो बेटर सिटी है टू लिव इन एज वेल, लेस hassle of finding accommodation for rent as compared to Galway and surroundings. ट्रैफिक के इश्यूज गॉलवे की निस्बत कम है, इफ़ यू जस्ट कंपेयर इट फ्रॉम गॉलवे स्कीम। देन लिमरिक और कॉर्क वो एक जैसी स्कीम्स हैं। उसके बाद आपके पास साउथ ईस्ट में थोड़ी सी जगह बनती है। सो लिमरी का जो कॉर्क है वो मॉडरेटली कॉम्पिटिटिव है, हाईली कॉम्पिटिटिव है। मॉडरेटली हाईली कॉम्पिटेटिव तो डबलिन की 6 स्कीम्स हैं डबलिन है, बेसिकली ना। कहते हैं कि बड़े जो सिटीज हैं, मसलन डबलिन हो गया, कॉर्क हो गया, क्योंकि आयरिश लोग पसंद करते हैं बड़े बड़े हम्म। सिटीज को। तो लिमरिक में मैंने कम लोग देखे हैं आयरिश वैसे। सो डबलिन, लिमरिक में कॉर्क। बहुत पाकिस्तानी है। हाँ, शायद। तो ये है कि डबलिन और कॉर्क जो बड़े सिटीज है ना, आप इनको साइड पे कर लें। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर तो वैसे अकोमोडेशन भी बड़ी एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो अकोमोडेशन रेंटिंग के हवाले से भी ये ये आपके लिए स्टैम्प सूटेबल नहीं फोर है। होल्डर के लिए मैं लिमिक भी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ, हाँ, जैसे मैंने कहा, कैरी, डोनेगल, उसके बाद साउथ ईस्ट, और फिर आप मिड वेस्ट। मिड वेस्ट और साउथ ईस्ट को बराबर रख लें, उसमें आप रिसर्च कर लें, उन लोगों से पूछ लें
ठीक है। कि अब अगर फर्ज करें हमारा तो टारगेट है, वो बेचारे पाकिस्तानी हजरात हैं जिन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ अप्लाई किया, और मुझे इतनी खुशी है कि उन्होंने टॉप किया हम्म, है और जो मिथ थी वो ब्रेक की है कि पाकिस्तान से आप ट्रेनिंग के लिए, मतलब ये हाँ बहुत बड़ा बिल्कुल मैसिव एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल। ट्रेनिंग जो है वो आप इतना हाई स्कोर करते हैं, आप बहुत बड़ी लर्निंग होती है। तो उनके लिए बेसिकली आप कोई ऐसी गिदड़ सिंह आप बताएं उसके गिदर गिदर सिंह की वो कुछ भी नहीं है, बस चुप करके दुआ करें और उनके ये लिए उनके लिए कौन सी उनको टॉप पे रखनी चाहिए? कैरी है, कैरी आई थिंक मेरे ख्याल से। हैरी। कैरी और ठीक है। डोनिकॉल। कैरी और डोनिगल, और मेरे ख्याल में गॉलवे जिसमें पोर्टिंकला हाँ और मिड वेस्ट तीसरी, हाँ। मिड वेस्ट तीसरे मिड नंबर वेस्ट, पे। हाँ। तो ये तीन जो हैं आपको देख लें आप, मेरे ख्याल में क्योंकि मैं इस्तिखारा एक कर लें। ऐसे बंदे को जानता हूँ जो 10th डिसाइल में था लास्ट टाइम। 10th डिसाइल वो होता है मतलब जो, सबसे सॉरी 10th या फर्स्ट, आई डोंट नो, मुझे फॉरगेट कर रहा हूँ, लेकिन वो ठीक है। लीस्ट, उसका मेरिट सबसे नीचे वाले ग्रुप में था। और उसके पास स्टैम्प 4 भी नहीं थी, वो स्टैम्प 1 पे था, और उसको आयरलैंड आए हुए भी 1 साल हुआ था। तो उसको तीसरी लिस्ट में मिड वेस्ट में मिली। यूनिवर्सिटी में मिल गई। अच्छा, ये तो चले हो गया जो पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे हैं जिनके पास स्टैम्प फोर नहीं है। अम, तो जिसने हमारा ये सेशन देखा है तो कैरी, टोनिकॉल और मिड वेस्ट जिसमें गॉलवे, पोर्टिउंकला और रॉसकॉमन आता है, आप इसको सिलेक्ट करें। आयरलैंड इतना बड़ा नहीं है, अगर आपको आप कह रहे ड्राइविंग तीन आती है। में ऊपर नीचे करके इनको डाल दें, उसके बाद आप साउथ ईस्ट और मिडलैंड्स को डाल सकते हैं साथ ही। ठीक है, मिडलैंड में कई दफ़ा आपका साउथ जी ईस्ट में ये करता है। वैक्सफोर्ड, वाटरफोर्ड, ये किलकैनी आता है ना? सॉरी किस में? साउथ साउथ ईस्ट में, ईस्ट हाँ। में। हाँ, जिसमें ये भी छोटे वाटरफोर्ड, छोटे टाउन है। वैक्सफोर्ड, किलखैनी, कार्लो, ये चार कर लो। टाउन आते हैं। कर लो होते हैं। और उसके बाद आ जाता है फिर ये मिडलैंड्स। आपका मिडलैंड्स आ जाते हैं जिसमें ये पोर्टलिश वगैरह आ जाते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, घबराना नहीं है, आयरलैंड 4 से 5 घंटे की ड्राइव में ख़त्म हो जाता है। अगर आप एक मोटरवे से शुरू करें दूसरे मोटरवे के अंदर, तो आपको ड्राइविंग आती है तो मैनेज हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती है अगर आपके पास स्टेम वन है। तो ये जो डॉक्टर मौजम, ये जो लोग गलती करते हैं कि स्टेम वन हो या स्टेम फोर हो इरिस्पेक्टिव, वो हाई में अप्लाई कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जी हम डबलिन पहले रखेंगे, डबलिन में क्या पता मिल जाए, अच्छा फिर उससे नीचे ये रखते हैं तो हमें उससे नीचे नीचे रैंक में मिल ही जाएगी अगर कहाँ पे देखिए खाली मैं होगी। आपके सामने वो ये मिसाल डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हाँ, ऐसे ही है ना? मेरे पास टाइम 4 थी और मैंने डबलिन की स्कीम्स ऊपर डाली थी। हाँ, तो मेरे जो मैंने फोर्थ अपनी प्रेफरेंस डाली थी, जिसमें मुझे मिल सकता था आराम से, तो मुझे फोर्थ भी नहीं मिला। मुझे जब वन फर्स्ट टू नहीं मिली तो मैं आई गॉट पुश डाउन टू सिक्स्थ प्रेफरेंस। सिक्स प्रेफरेंस। ठीक है हाँ, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम्म अगर आप ये समझे कि मैंने हायर वाली ऊपर डाल दी है तो उससे नीचे नीचे मुझे मिल जाएगी जहां पर सीट खाली होगी, ऐसे नहीं होगा। हम्म जिसने मतलब जो डाली है ना नंबर वन टॉप पे, तो पहले अगर किसी और को नहीं मिली तो उसको ऑफर हो जाएगी पहले। तो हम्म जिसकी टॉप की मिस होगी वो कहीं पे नीचे जाएगा जहां पर खाली कहीं पे बिल्कुल। कंप्लीट। तो ये एक डिफरेंस है, आपने इसको समझना है। और आई होप के मेरी विश है कि पाकिस्तानी को पाकिस्तान से इस दफ़ा मिले और अ, हम उसको सेलिब्रेट करें, टू बी ऑनेस्ट। इंशाल्लाह खासतौर पे इंशाल्लाह। बीएसटी की स्कीम्स हैं वो भी उनकी उन्हीं की भी रैंकिंग इसी तरह ही आप देख लें, बड़े शहरों के अंदर हाई होगी, उससे कम होगी, सेम सेम गोज फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बहुत शुक्रिया बिल्कुल। डॉक्टर मौजम आपका। कोई और मसला नहीं, आई आपके लिए होप के करूँगा। ये हम रात के इधर कितने बज गए हैं, 12 2 बज गए हैं, 2 बज गए हैं और आप भी टायर्ड हैं, मैं भी टायर्ड हूँ। तो होपफुली इंशाल्लाह इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आप डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह। खुशी होगी अगर पाकिस्तान से लोगों को मिलती है डायरेक्टली इधर। जी परफेक्ट, ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।